Hello students, how are you doing today? Are you preparing for your exam, for your PA1 exam? And have you gone through my video that I shared you on your WhatsApp number? Did you find any difficulty in understanding the topic? And do ask me if you have any problem, beta, because I'm trying my hard to explain the topic properly. I'm sharing those pages so that you can find easy to read, and after watching my video, if you still have any problem, do message me. All right, so I'm going to start your next topic on the second day. So yesterday I think you might have learned what were mobile computers. I gave you example in the previous slides. There were different slides that I showed you. I have covered mobile computer, microcomputer, mini computers. Did you find any difficulty in understanding all these topics? If you do, still let me know. Alright, so let's move on to the next topic, which is mainframe computers. So आज हम इस दो टॉपिक को कवर अप करेंगे, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स, and definitely go through these uh, main points, get smarter and simple facts which will help you in your PA1 exam. Other than that, definitely I'm going to give you some points, and if you can pick up 5 to 10 points on from my daily lectures, then it would be great for you. You just go in and listen my video, um, prepare some points for you, write it down in your copy, and learn. And definitely those topics, question may come. There are 30 questions you might be knowing that is going to come in your coming exam, and all are objective type questions you have to prepare properly. So let's discuss the remaining two topics on type of computer. So what is mainframe computer? Let me read it for you once. These are powerful computers that are used by large organizations and armed forces to perform large tasks and manage huge amount of transactions. For example, a bank handling daily tasks of thousands of customer requests will use a mainframe computer. This is because bank wants to ensure that all the users can access their accounts without failure. Mainframes are used for a large amount of transactions and reliability of operations to handle these transactions. Mainframes are used by large organizations, airline and bank. ट्रांजैक्शन मीन्स जहां पर पैसों का लेन देन, उसको ट्रांजैक्शन बोला जाता है. सो as I read these statement for you, let me brief up. These mainframe computers are huge computers which are much more powerful than personal computer like desktop, laptops, mobile devices and others, because here huge amount of data is kept for future reference, for other reference. Like in bank, if you have gone to bank with your parents, you might have noticed several employees are working together on the terminal. Terminal means the computers that is kept in front of them. There is a huge crowd of customers which are doing some transaction, doing some other works related to their bank account. So उनको instant reply देना बहुत ज़रूरी होता है, and based on the data they have in their database of bank, वो तुरंत रियल टाइम में वो काम करते हैं. मीन्स अगर थोड़ी देर पहले आपने कुछ अमाउंट उठाया एटीएम से, तो तुरंत
बैंक के अकाउंट में आपका जो अकाउंट मैपिंग किया हुआ उसमें रिजल्ट दिखा देगा कि इतने बजे इस डेट में इस लोकेशन एटीएम लोकेशन से वो पैसा ट्रांजैक्शन किया गया, वहां पर एटीएम कार्ड नंबर भी आएगा। सो इतना सोफिस्टिकेटेड काम एक नॉर्मल कंप्यूटर कभी नहीं कर सकता। So in order to do that particular task, several computers are connected together and it is running online in real time. Real time means whatever आप उसमें changes ला रहे हो या transaction करो वो तुरंत update हो जाता है। तो इसमें एक मास्टर सर्वर रहता है, सेंट्रलाइज सर्वर, जिससे सारे कंप्यूटर्स अटैच होते हैं। इफ यू चेक द फिगर, ये पूरा रूम के जितना बड़ा होता है। इट इज अ कंट्रोल रूम ऑफ मेन फ्रेम। द बेस्ट एग्जाम्पल आपको अगर मैं और दूं तो फेसबुक के नाम आपने सुना ही होगा। फेसबुक इज has been used worldwide and daily billions of users are logging to their account and someone is doing chat, someone is posting other things, someone is doing other stuff. So ये जो कौन करेंगे, तुरंत जो काम कर रहे हैं, लगातार जो काम हो रहा है, ये गूगल सॉरी फेसबुक के सर्वर में तुरंत सेव होता है। हर एक जो रैक्स या आप फ्रेम देख रहे हो, इसमें एक एक हार्ड डिस्क अलॉन्ग विद प्रोसेसर अटैच रहता है और ये सारे फ्रेम्स दूसरे फ्रेम से कनेक्टेड रहते हैं। सी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपके 20 to 40 सर्वर्स होंगे। इट्स अ ह्यूज रूम और इट्स एयर कंडीशनर रूम बिकॉज इतने बड़े कंप्यूटर से काम करते हैं, इट जनरेट्स लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट। सो कंप्यूटर ज़्यादा गर्म ना हो जाए, ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो प्रोसेस बर्न हो सकता है। सो टू मेंटेन द consistency of CPU and other devices, यहाँ पर रूम टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। So mainframe computers are used where huge amount of transaction is used. एक और important example मैं आपको देना चाहूँगा is railway reservation system. The moment you do a reservation of train ticket, जैसे आपका रिजर्वेशन हुआ, आपको बर्थ अलाउट हुआ, तुरंत मास्टर डेटाबेस में अपडेट होगा कि इतने सीट्स और अवेलेबल हैं। So now let's move on to the last topic of types of computer, which is supercomputer, as the word suggests, supercomputer. So it is the most powerful computer of rest of the computer that is available today. So what are supercomputers? Supercomputers are used for complex data and high speed of operations performed to process this data. These are powerful computers that are used by scientific organizations to perform complex tasks and manage huge amount of data. For example, Meteorological Department of India, the department that predicts weather pattern in the country. जैसे मैंने कल आपको बताया था वेदर फोरकास्टिंग भी सुपर कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है। सो हियर इट सेज अबाउट इट प्रेडिक्ट्स वेदर पैटर्न, मतलब बारिश कहाँ होनी है, कहाँ धूप ज़्यादा निकली है, कहाँ क्लाउडी वेदर है, इस तरह की प्रेडिक्शन मीन्स जानने के लिए ये संभावना जिसको होता है। प्रेडिक्शन मीन्स पूर्ण गणना, पहले से ही आइडिया किया जा सकता है कि वहाँ क्या हो सकता है। So it is a prediction, it is not a surety, हो सकता है, so it is a prediction. So यहाँ उस तरह के predictions these type of computers के through किए जा सकते हैं। So these uses supercomputers to analyze and predict weather. Supercomputers can process trillions of instructions per second. You might have heard about million, billion, trillion. So above all बिलियन एंड बिलियन ट्रिलियन, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में रिजॉल्व करता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक रिसर्च सेंटर्स, सैटेलाइट कंट्रोल डिपार्टमेंट यूज सुपर कंप्यूटर्स। सो यू गॉट एन आइडिया सुपर कंप्यूटर्स कहाँ यूज होते हैं, किस तरह की जगह यूज हो सकते हैं। सैटेलाइट मीन्स अगर कोई एस्ट्रॉइड
पृथ्वी से टकराने वाला इस तरह के आपने सुना हो नासा, हैव यू हर्ड अबाउट नासा? DRDO, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सुना होगा आपने। सो यहाँ पर आपके सुपर कंप्यूटर्स का यूज किया जा सकता है। सो फ्यूचर प्रोडिक्शन, जितने भी प्लैनेट्स हैं उसका उस पर रिसर्च करना, कहाँ, जैसे आपने सुना होगा कि कितने प्लैनेट्स हैं और कितने प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स हैं, गैलेक्सीज हैं, व्हाट दीज डिटेल्स, ये सारे डिटेल्स ये गैदर करते हैं, ये सुपर कंप्यूटर्स के माध्यम से गैदर किया जाता है। So some of the popular supercomputers shown over here, on the right side, it is Cray 1 computer, ये पहला कंप्यूटर था जो इंडिया में बना। इसके बाद Cray 2 आया, then Param, then IBM has also developed IBM Secure, Fujitsu के computer. So these are the popular supercomputers available today. And you have to go through these points which is showing over here based on type of computers. Tomorrow I will try to give you some questions and points that you have to write down on your computer copy, and it will help you to memorize and study again and again by watching my video and go through the books that I make you available through picture format. Tomorrow I'm going to discuss, but I'm still not sure because I have to give you some questions and you need some time to practice. So it may be possible or day after tomorrow I'm going to cover this topic on programming language. Let me tell you briefly right now कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको कहा जाता है, क्यों हम यूज करते हैं। इफ यू रिमेम्बर, कल मैंने आपको दिखाए थे कितने तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन आपको मालूम है कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज जस्ट ए हार्डवेयर एंड विदाउट प्रोग्रामिंग इट्स ए डेड हार्डवेयर। कुछ करता ही नहीं है जब तक कि हम उसको इंस्ट्रक्शंस ना दें। ये इंस्ट्रक्शंस किस तरह के हो सकते हैं? जनरल इंस्ट्रक्शन, जैसे मैं आपको बोलूँ, आपने सिस्टम को ऑन किया, आपने MS वर्ड ऑन किया, मीन्स आपने कंप्यूटर इंस्ट्रक्ट किया कि मुझे ये एप्लीकेशन खोलना है। जैसे ही आप MS वर्ड पर क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। यू वांट टू वॉच ए मूवी, यू ओपन अ वीडियो प्लेयर, यू ब्राउज दैट पर्टिकुलर फाइल एंड क्लिक ऑन इट। सो जो भी इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं उसमें कंप्यूटर हार्डवेयर हमको शो कर रहा है, CPU उसको रीड कर रहा है, it processes the data and it displays you a meaningful information. So ये जो इंस्ट्रक्शन हम क्लिक कर रहे हैं, माउस से टाइप कर रहे हैं, या गूगल वॉइस, या अगर माइक्रोफोन हमारे इसमें कंप्यूटर में लगे रहता है, अगर स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम सच एज कोर्टाना, जो कि लास्ट ईयर आपको मैंने बताया था, कोर्टाना एंड सिरी, डिड यू रिमेम्बर दैट? कोर्टाना और सिरी के थ्रू अगर हम बोलते हैं तो वो रिकॉग्नाइज करता है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। So accordingly, computer process that particular data and displays you on the screen. So ये जो instructions हम दे रहे हैं, these instructions flow in a software format. हमारा जो ये voice जा रहा है, it transmit that audio signal to the signal that computer has in 010 format. कंप्यूटर हमारे लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करता, इट ट्रांसलेट आवर लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। मतलब हमारा जो ये वॉइस आप सुन रहे हैं, ये ऑडियो वॉइस को कन्वर्ट करता है। ऐसे ही व्हाटएवर वी आर टाइपिंग, दोस थिंग्स आर आल्सो ट्रांसलेटेड और इंटरप्रेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। ये सिग्नल को समझता है। जैसे let me give you a general example. If you want to switch on your fan in your room, आप क्या करेंगे? आप उठेंगे, उठ के स्विच को प्रेस करेंगे। The moment you switch the press the switch, क्या करेगा? स्विच के अंदर जो केबल लगा हुआ उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल करता है, तो वो वायर के थ्रू आपके फैन
के केबल में जाके स्ट्राइक करेगा। तो उसके अंदर जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जैसे ही स्विच ऑन होगा वहां से फ्लो करके आपके फैन पे जाके स्ट्राइक जब करेगा तो आपका फैन रोटेट होगा। इन अ सिमिलर मैनर, whenever we are typing something from a keyboard or clicking something from a mouse or saying something through microphone, that particular signal transmit within the computer keyboard, which is motherboard. Motherboard में signal electrical signal transfer होता है, वहां से जाके आपका CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है। वहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डिटेक्ट करता है किस तरह के इंस्ट्रक्शन और सिग्नल मेरे पास आया है, एंड अकॉर्डिंग टू इट वो डेटा को वहाँ प्रोसेसिंग करके आपके आउटपुट डिवाइस में शो करता है। सो मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई एम गोइंग टू गिव यू some examples, and accordingly we will discuss these 4th generation of computer programming language from 1GL to 4GL, जहाँ पर मशीन लैंग्वेज, असेंबलर, हाई लेवल लैंग्वेज, ये सब के बारे में बता रखा है। आई एम गोइंग टू show you some pictures also where you will have some idea कि किस तरह से if it possible मैं आपको वीडियो भी शायद शो करूंगा जिससे आपको और भी अच्छी तरह समझ में आए। So it is a time taking topic. It may cover 2 days of time, and once you understand properly you will definitely going to solve the question that I am going to give you on your WhatsApp number. ठीक है? So go ahead and read the previous topic, that is on types of computer, and I will try to give you 5 to 10 questions tomorrow. Just watch the lecture and listen, sorry, check the pages that I shared you, and accordingly reply those answers or write down in your copy and send it to me after taking picture. Alright, so see you tomorrow then, students. You have a wonderful day. Bye bye.